व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी फॉरबी। और लास्ट वीडियो में हम खेल रहे थे द स्टैनली पेरेबल। तो स्टैनली पेरेबल हमारी एक बड़ी सी आईटी कंपनी का एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय होता है, जिसको एक दिन कुछ काम नहीं मिलता और वो अपने ऑफिस में बैठा बैठा परेशान हो जाता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है पता करने के लिए आज काम क्यों नहीं मिल रहा, तो उसे दिखता है कि उसका कोई भी साथी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। वो अकेला है वहाँ पे और ये ढूंढते ढूंढते फिर वो अपने बॉस के रूम में जाता है। वहाँ पे उसका बॉस नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पे एक सीक्रेट पासवर्ड मिलता है जिसको डाल के एक सीक्रेट गेट खोलता है। तो स्टैनली वहाँ पे चलता जाता है और हम वहाँ पे डिस्कवर करते हैं माइंड कंट्रोल फैसिलिटी। तो माइंड कंट्रोल फैसिलिटी क्या है? वहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टैनली का अभी तक दिमाग कंट्रोल हो रहा था। वो खुद से कुछ कर ही नहीं रहा था। सारी एम्प्लॉय, सारी दुनिया जो भी है सबका माइंड कंट्रोल हो रहा था। और उसके बाद असल में माइंड कंट्रोल फैसिलिटी में कोई दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से स्टैनली का जो भी लिंक है वो टूट जाता है माइंड कंट्रोल फैसिलिटी से, और हम आगे जाते हैं और माइंड कंट्रोल फैसिलिटी की पावर को कंप्लीटली शट डाउन कर देते हैं। और उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, हम एक बाहर पार्क में आ जाते हैं और उसके बाद जस्ट खत्म। तो नरेटर हमें कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम जीत चुके हो, हम कंप्लीटली फ्री है। पर ऐसा लगा नहीं, मतलब जीतने के बाद जो फील आती है वो फील नहीं आई अभी तक। और उसके बाद जैसे ही हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं इस स्क्रीन पे, एंड आई वाज, अब जानेंगे आगे, थोड़ी खोजबीन करेंगे इस गेम में कि अब क्या होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गेम शुरू भी इसी पॉइंट से हुई थी लास्ट टाइम भी। कोई भी नहीं है, नोबडी हियर। कोई एम्प्लॉय नहीं है उसका, सिर्फ इनके। एक सेकंड, शायद हमने लास्ट गेम में कुछ मिस कर दिया, ऐसा हो सकता है एक बार। कैमरा, कॉफी, ओके, लाइट्स। ये फोन बज रहा है लेकिन उठाने के लिए कोई नहीं है। क्या हम उठा सकते हैं क्या इसको? Hi, Stanley. Just ओह, wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. स्टैनली की वाइफ भी है। ओके, स्टैनली की वाइफ है, इसके एम्प्लॉयज गायब है। हमें ढूंढना है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज कहाँ गए इसके सारे। वो रूम खुला हुआ है, यहाँ पे कैसे जाएं हम? ओके, इस साइड था वो रूम। When Stanley came to a set of two open doors, Okay. he entered the door on his left. अभी वाइफ का कॉल आया है इसकी कि लेफ्ट साइड हम जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से कल हम पूरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया था लास्ट वीडियो में हमने इसका, लेकिन फील तो नहीं आई थी ना उसमें। इस बार राइट जाके देखते हैं। This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. हम कुछ भी कर रहे हैं, ये गेम पहले गेस कर दे रही है। Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. ओके, तो गेम में हम कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे कि हमने। Yes, really, बोलने really दे worth it भाई। being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. But मोक eager कर to रही है get हमें। back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. वेट, Yet there was not क्या a वहीं पे single आ गए, हमें person वहीं पे here ले आए either. नरेटर? Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. गाइस, नरेटर हमें उसी एंडिंग की तरफ पुश कर रहा है बार बार। हम लेफ्ट गेट में गए तो भी यहीं पे आए थे, हम राइट गेट में गए, एम्प्लॉय लॉन्च दिखा के वहां पे से डी टूर करवा के वापिस से यहीं पर ले आया। लास्ट टाइम इस रूम में भी कुछ स्पेशल चीजें देखी थी हमने। टारगेट्स, पुश फॉर फंडिंग फॉर R&D ऑफ न्यू कॉफी मशीन। ओके, रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉफी मशीन। ओके, गेट क्रिस आउट ऑफ द ब्रूम क्लोजेट। ओके, ब्रूम क्लोजेट से क्रिस को बाहर निकालना है। क्रिस को पता करना पड़ेगा, हो सकता है क्रिस ब्रूम क्लोजेट में बंद हो। क्रिस भी एक एम्प्लॉय होगा कंपनी का, और वो ब्रूम क्लोजेट में बंद है, तो हमें ढूंढना है ब्रूम क्लोजेट। ओके, सिनर्जाइज पेपर्स, पेपर्स आर टू सिनर्जाइज्ड। हाँ, फायर पेपर गाय। ओके, हायर समबडी टू फायर द पेपर सिनर्जाइजिंग गाय ब्रो।
ये आज के ज़माने में चल रहा है कंपनियों में, कंपनियां हायर कर रही है और फायर कर रही हैं काम करवाते। हु मूव्ड माई डेस्क? पहली बात तो ये लिखा किसने है? ये ऑन गोइंग द फ्यूचर वॉज येस्टरडे, टुमारो इज नाउ। टुमारो, टुमारो इज नाउ। फ्यूचर जो है वो कल था और जो कल है वो आज है। फ्यूचर कल था और जो कल है वो आज है। सो वी आर लिविंग इन फ्यूचर एंड वी हैव लिव्ड फ्यूचर इन आवर पास्ट। डजंट मेक सेंस। टुमारो कंप्लीट टुडेज अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स, राइट नेक्स्ट डेज एजेंडा रिफ्लेक्ट। तो कल हमें आज का जो अनफिनिश्ड काम है वो करना है, राइट द नेक्स्ट डेज एजेंडाज, और उससे अगले दिन के एजेंडा लिखने हैं। लेकिन जो Stanley फ्यूचर है just वो stood कल there था। doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms. ब्रो ही इज एनालाइजिंग मी। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। फुल कमेंट्री भाई साहब। मीटिंग रूम ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके। फाइनेंशियल पैनिक मीटिंग। नेम बड़े क्रेजी क्रेजी यार, आई लाइक दम। वीकली रिव्यू, प्रैंकिंग फ्लोर्स मीटिंग, डू नॉट ऑल्टर द विदाउट कंसल्टिंग वाइट बोर्ड मैनेजर, ओके। रिप फ्रोन्स, एक फ्रोन्स भी ढूंढना है। फ्रोन्स कौन था? फ्रोन्स, फ्रोन्स का पता लगाना है गाइस। What do people want? Things, money, more money. Things but with money to buy more things. Graphs but things. Graphs about things plus money. Yes, that's what people want. The stock market is somewhere here. Colored in segments, stripes. Tips for not getting fired, okay? Talk less. How to spoil a dispute with a coworker. Let it boil up inside you. Take it out passive aggressively on other coworkers. Resent coworkers for not supporting you more. ब्रो गाइस, जो हमें करना चाहिए बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। अगर किसी कोवर्कर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झड़प हो जाती है, तो उसको सोल्व करने के लिए या तो उसको अपने अंदर दबा के रखो, उसको बताओ ही मत, और अंदर परेशान होते रहो, परेशान होते रहो, परेशान होते रहो। नहीं तो उसको रिजेंट करो। कोवर्कर से बहुत ही मतलब दुश्मनी ले लो, उसको पसंद ही नहीं है मेरे को, चल तू जा यहाँ से। तो Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. मेरे को नीचे जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैंने जो स्क्रीन वाले रूम में आए थे ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स थे, शायद वहाँ पे कुछ हमें क्लू मिल सकता है। Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Yes. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. स्टैनली को नहीं पता होता ये नंबर, ओके, नरेटर ने बताया हमें, लेकिन स्टैनली को कोई कोवर्कर नहीं मिल रहा और वो अपने बॉस के ऑफिस में आता है और वहाँ पे Stanley बॉस just भी sat नहीं है। around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. तो ये मुझे बोलने नहीं दे रहा, मुझे बीच बीच में रुक के बोलना पड़ रहा है। तो गाइस क्या हुआ यहाँ पे, स्टैनली को पासवर्ड पता नहीं था, और पता होना भी नहीं चाहिए था, नरेटर ने बोला, लेकिन नरेटर ने हमें पासवर्ड बता दिया है और हमें पता नहीं होगा और हमने वो पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। लेकिन एक बात इसने पहले बोली कि उसे कोई एम्प्लॉय नहीं दिखा, अपना कोई कलीग नहीं दिखा और अपना बॉस भी नहीं दिखा, तो कोई डार्क सीक्रेट छिपा हुआ है। ऐसा कौन एम्प्लॉय सोचता है? अगर बॉस उसका ऑफिस में नहीं होगा तो क्या मुझसे क्या डार्क सीक्रेट छुपा रहे हैं सारे लोग, कहाँ गए सारे? मोस्टली वो सोचेगा यार मेरा बर्थडे तो नहीं है, कहीं पार्टी वार्टी हो रही है मेरे बर्थडे की। मुझे लगता है इसका बॉस ही नरेटर तो नहीं कहीं, Descending deeper into the इसका building, बॉस गायब नहीं है, इसका Stanley बॉस ही realized he हमें felt a कमांड्स bit दे रहा तब से, peculiar. It और was a स्टैनली stirring of का emotion माइंड in his कंट्रोल chest, किया हुआ है अभी as भी। though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long.
तो स्टैनली को अब ऐसे क्यों फील हो रहा है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, जबकि कई सालों से Stanley walked वो straight एकदम ahead बढ़िया through the चल रहा large था। door that read Mind Control Facility. तो इसको पता चल जाता है हमें कि माइंड कंट्रोल फैसिलिटी है, और आगे जाके हमें पता चलेगा माइंड कंट्रोल फैसिलिटी में कि हाँ भाई वो स्विच ऑफ हो गया था, जो भी था उसमें दिक्कत आ गई थी कुछ, और जो उसमें दिक्कत आई थी ये बोलेगा अभी, नहीं बोला। The lights rose on an enormous room packed with बहुत ही television awesome scene लगता है screens. यार। What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? तो माइंड कंट्रोल फैसिलिटी में कोई ग्लिच था जिसकी वजह से स्टैनली को पता, मतलब स्टैनली कंट्रोल लूप से बाहर आ गया जो भी था, और इसलिए अब उसको ऐसा अजीब अजीब फील हो रहा है कि इतने सालों से वो कंट्रोल में था और अब उसे लग रहा है कि ये क्या, कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे साथ। Now the monitors jumped to life, their true Fired. nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, so Stanley's co-workers, the lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. स्टैनली का ऑफिस कहाँ पर है, दिख रहा है किसी को? इतने सारे ऑफिस में कैसे ही देखें स्टैनली का ऑफिस? एक बंदा फायर्ड हो चुका है, वो मैं ही हूँ वैसे। This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been 084, manipulated to 120. accept it blindly? तब पे नजर रखी जा रही he है, एक refused to एम्प्लॉय फायर हो believe it. चुका He है। couldn't accept it. His own life in someone else's control. Numbers, line-wise भी नहीं Never. लिखे। It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? आगे क्या? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. क्या ये सारे यहाँ से तो हम आए हैं। ओके, आगे 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 जा रहे हैं हम। ओके, माइंड कंट्रोल स्टेटस ऑफलाइन। तो आई थिंक कि माइंड कंट्रोल हमारा हो रहा था जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे, या सोच रहे थे कि स्टैनली जिस कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन असल में वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये है, और ये सारे उन एम्प्लॉयज़ के डेस्क होंगे जो असल में हमारा माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। बटन को दबाने से कुछ भी नहीं हो रहा। माइंड कंट्रोल स्टेटस ऑफलाइन। ओके, माइंड कंट्रोल साइड अवेटिंग इनपुट ब्ला ब्ला। ये कोड क्या लिखा हुआ है? And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? भाई मैं तो बस देख रहा था भाई क्या होता है। I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off. अब ऑफ भी नहीं हो रहा है यार। If you want to throw my story off Loading track, mind you're control going to have to do systems, much okay. better than that. I'm afraid you don't have है क्या nearly यहाँ the पे? power you think you do. For example, and I believe you'll ये find नहीं this हो रहा। pertinent, Stanley suddenly realized मेरे को ऐसे he क्यों had लग रहा है just स्टैनली की स्पीड भी initiated थोड़ी the स्लो हो गई network's है। emergency detonation system. पहले शायद थोड़ी In तेज the चल रहा था और event अब ये that थोड़ा this स्लो हो machine गया is है। activated without proper DNA identification, nuclear detonators पहले are काम set नहीं to कर रहा था। explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? मुझे कुछ पता भी नहीं मैं क्यों दबा रहा हूँ ये बटन्स। A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. ग्रीन रंग के बटन थे, ब्लू थे, तो अच्छा ही लग रहा है कि इनको दबाने से कुछ हो सकता है। I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course,
That was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Okay, wait, इनमें number लिखा हुआ था कुछ. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Yellow. Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, number कहाँ पे? 2 running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why do you think that, Stanley? That this video game can be beaten? One solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? शायद ऊपर से 3. Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world. That's fine. कोई नंबर नहीं लिखा green पे. Destroy it first. What? So one or goodbye employee photo. Take a look at the clock, Stanley. Blue, That's blue 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. इससे कुछ भी नहीं हो रहा. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Fuck.